A very good afternoon and welcome to our session on the topic Myths and Fact of Fertility and Infertility. We are glad to have Dr. Arun Boruah who will talk about the topic briefly. The doctor will help us understand the topic and the importance of each and every detail in it. Doctor, you have the stage. Good afternoon and happy Deepavali to all of you. I'm sure the celebration must be at the pinnacle and the festive mood is being visible everywhere around with India beating Pakistan in a so-called nail biter. Coming to the point of today's presentation, that's myths and facts about both fertility and infertility, because whenever we see a patient, a lot of things goes into the patient's mind. So it's our job and a duty कि हम लोग पेशेंट को पहले बता दें कि क्या सच है क्या सच नहीं है and how much they can expect and what is the reality on the ground. So if we want to move ahead, let us know what is infertility. Infertility किसको कहा जाता है? We say inability to achieve conception despite 1 year of frequent unprotected intercourse. ये जो 1 साल की टाइम लिमिट दिया गया है, दिस इज अ ब्लैंकेट डेफिनेशन. ऑफ कोर्स ये कभी कभी चेंज भी होते हैं. अगर कपल की एज 35 इयर्स की ऊपर हो, उनकी पहले कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई सर्जरी हुए हो, या इफ दे वर ट्रीटेड फॉर सम सॉर्ट ऑफ कैंसर थेरेपी, मे बी सर्जिकल और कीमो. Likewise, we have little amount of fluctuations. ये नहीं कि हम लोग 1 साल तक देखना ही है, जब भी आते हैं. नो, you wait for 1 year. क्योंकि लोग जब हम लोग का पास आते हैं प्रेगनेंसी की उम्मीद लेकर के, हमने देखे हैं कि सब लोग हम लोग को यही कहते हैं, we have tried for, we have planned for, and we have been together for 2 months, 1.5 months, 3 months. So, लोगों की यही उम्मीद है कि जब भी हम लोग चाहते हैं तभी हम लोग को प्रेगनेंसी आना चाहिए. So what I say is the public opinion is pregnancy is always on demand. तो थोड़ी सी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं जिसमें आपको यही समझ में आएगी कि प्रेगनेंसी हम लोग किस तरह होते हैं. We have a relationship. Following the relationship, the male deposits the semen which contains sperm. Sperm is the male egg for fertilization. Similarly, we have the female egg stored in the ovary since birth. और हर महीना में एक अंडे बनते हैं बच्चे होने के लिए. मैं दोबारा कहता हूं, हर महीने एक अंडे तैयार होते हैं बच्चे के लिए. और ये जो अंडे निकलते हैं, ये कब निकलेंगे? We are also in dark. ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है और ये हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे. So this is the biggest hitch in reproduction, because we can always time our relationship, but we cannot time ovulation as per our choice. Then where is the problem? लोग यही समझते हैं everyone can demand and get pregnant at will. जब भी चाहते हैं मुझे बच्चा मिल जाता है. What is truth then? The truth is only 10 to 11% couple get pregnant in their first attempt. जब भी वो लोग चाहते हैं, जब भी उन लोग को चाहत से वो लोग आगे बढ़ते हैं, प्लान करते हैं, it's only around 10 to 11%. It's a pretty less number in comparison to the remaining that is being projected. Second myth क्या है? If your mom had an easy time getting pregnant, you will too have an easy time getting pregnant. Because बच्चे होने के रिश्ते में हम लोग अपने फैमिली को कंपेयर करते हैं. तुम्हारी मम्मी की पीरियड कब हुई थी? तुम्हारी मम्मी शादी के कितने साल के बाद प्रेग्नेंट हुए थे? क्या हुए थे? लड़की हुए थे ना लड़की हुए थे? So these are all traditions that common people believe comes in
while we are planning a pregnancy or while we are not achieving a pregnancy. But in reality, infertility is not a familial problem unless it has a direct relation to some causes of genetic inheritance. इसका मतलब यह है कुछ बीमारी फैमिलीज में चलते हैं, लेकिन बच्चा नहीं होने का या बच्चा होने का जो रिश्ते होते हैं, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैमिलियल इनहेरिटेंस. और जब भी हम लोग बच्चे के लिए सोचते हैं, द मोस्ट कॉमन थिंग इज द मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन होते हैं क्यों? दिस इज ओनली वन फैक्ट. जब भी हम लोग प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तभी एक औरत की मेंस्ट्रुएशन हो जाती है. So the menstruation is the process of cleansing the female blood for every month. This is what is the myth. And what is the fact then? The fact is menstruation is the shedding of cyclical preparation of the womb when pregnancy fails to occur. हर महीने जब अंडे बनते हैं, मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये अंडे कब बनेंगे मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम. अगर ये अंडे निकलने के बाद मर्द के अंडे के साथ मिल पाते हैं, तब बच्चे बनने की उम्मीद बढ़ जाते हैं. अगर बन जाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है. अगर नहीं बन पाते हैं तो वही प्रिपरेशन मेंस्ट्रुएशन के नाम से कहा जाता है, और जो फैमिली में हम लोगों का काफी टेबू समझ में आता है. तो दिस इज टोटली अ मिथ दैट मेंस्ट्रुएशन इज अनक्लीन. इट इज अनहेल्दी फॉर अ गर्ल टू बर्थ ड्यूरिंग periods. Once a girl begins to menstruate, she can become pregnant, so on and so forth. So, another very important myth that whenever we do not become pregnant or whenever we do not achieve our desire to become a pregnant, the onus is put on directly to the female partner. अभी भी इस देश में ये कहावत है, लोग अभी भी मानते हैं कि जब भी प्रेग्नेंट नहीं है तो पहले औरत को जांच कर ले, उसका बाद अगर जरूरत होगा, अगर डॉक्टर ने की बुलाव आएगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे. बट व्हाट इज द रियलिटी? In one third, the male partner is involved. In one third, the female partner is involved. And the remaining third, both the male and the female partner is involved. तो इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म. ये अकेला कहीं भी हो नहीं पाएंगे. जब भी हम लोग इसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोनों का साथ आना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज तभी हम लोग पूरे एसेस कर पाएंगे, हिस्ट्री ले पाएंगे, बातचीत खुली मन से हो पाएगी, एंड देन विल बी इन ए मच बेटर पोजीशन टू कंक्लूड what could be the possible reasons of infertility, and then we can plan out our investigations accordingly. Pregnancy can be achieved any time of the month. ये तो इतनी बड़ी फैमिलीज में सोच है. अभी अगर आपको पूछा जाए आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वो कहेंगे कि मेरे हस्बैंड आर्म फोर्सेस में काम करते हैं. तो आप लोग कितने साल से कोशिश कर रहे हैं? सर 3 महीना में वो आए थे, अभी 15 दिन हो गए, 15 दिन में वो निकल गए, तो मेरा भी पीरियड हो गया, तो मेरा यही उम्मीद था कि मेरे इस महीना में प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए था. So the expectation is pretty high because they do not have the right information. The fact is we can never demand a pregnancy, and the pregnancy chances are always around the time of ovulation. And जब अंडा कब बनेंगे, कब ओवुलेशन आएंगे, this is totally unpredictable, and no woman, कोई भी औरत एक सही वक्त लेकर के नहीं आते हैं जिस दिन उनके अंडे बनते हैं. So what is ovulation? Ovulation is the process of release of female egg for fertilization. And the fact is ovulation is variable according to the cycle length. जब भी अंडा निकलेंगे, कब निकलेंगे बोलना बिल्कुल मुश्किल है. काफी सारे चीजों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं.
अगर अंडे निकलते हैं, निकलने के बाद अगर ये फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएंगे, then one thing is certain, at least the preparation for pregnancy from the womb will shed off following 15 to 16 days after death of that female egg. So this is the fact. So we have to remember that a woman gets a definite time frame in a month or in a menstrual cycle to have the chances of becoming pregnant, and we have to capitalize on these chances. यही को हम लोग काउंसलिंग कहते हैं, लोगों को सही जानकारी देते हैं, और यही जानकारी लेकर के मेरे प्रैक्टिस में आई कैन एश्योर यू more than 40 to 50% couples they get pregnant. दुनिया में और एक मिथ फैले हुए हैं, taking a pill can reduce fertility. By this pill I mean a contraceptive pill. क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं शादी के बाद या शादी के पहले अगर कोई आते हैं तो कहते हैं सर हमको ऐसा कोई दवा दे दीजिए, हमको 2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ना, हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, और थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल भी स्टेबल होना चाहते हैं। इट्स वेरी फाइन, दे कैन ऑलवेज प्लान आफ्टर नोइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिक्विजिट फर्टिलिटी कंसल्टेंट। देन व्हेन यू प्रमोट देम द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑफ टेकिंग ए पिल, बस सब इतने डर जाते हैं क्योंकि ना ना सर हम ये पिल नहीं लेंगे क्योंकि ये पिल लेने से मेरा कभी भी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द सिस्टम which is present in the country. So what is the fact then? The fact is we do not know the non-contraceptive benefits of the pill, and as far as the fertility is concerned, these pills prevent conception in the month we prescribe. जब भी हम इसको जिस महीना पे लेते हैं, अगर सही वक्त से लेते हैं तो ही उस महीना के अंडे निकलने में रुकावट आते हैं, तो इसीलिए उस महीना में उनका बच्चा हो नहीं पाएंगे। So then what do we do? Next we come to the male part, sperms. Abstinence of 3 to 5 days is must for a good sperm. Is it the truth? This is a myth. So what is the fact? The fact is lesser gap can give sperms a good motility. And what do you mean by lesser gaps? अगर हम लोग स्टडी को देखते हैं, स्पर्म जहां पे तैयार होते हैं, दिस इज a continuous process. It takes place in the testis, जो झोले हुए रहते हैं, and this is a continuous process, and sperm takes around 72 to 90 days to get fully mature. और मेच्योर होने के बाद वहीं पे इपिडिडाइमिस के नाम से एक जगह है where they are being stored, and from that organ whenever the male enters in the process of excitement, sperms वहां से निकलते हैं। तो if you have this on a frequent basis का मतलब है if you have a very frequent intercourse, we feel that we get the best part and the motility of the sperms is maintained. अगर वहां पे ठहरे हुए रहते हैं, बाहर आ नहीं पाते हैं, then they undergo certain damages which reduces the chances of the sperm to become pregnant. Another common myth in a society is PCOD. I had talked about earlier, we can talk it again. The polycystic ovary requires fertility treatment because लोग यही समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस आ गया, मेरा पीसीओएस है, मेरा पीसीओडी है। बीमारी क्या है वो उसको समझ में नहीं आने के बावजूद वो लोग एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज विथ फर्टिलिटी। हम आपको खुल्लम खुला यही कहते हैं, पीसीओएस इज नॉट एन इजी एंड प्रिसाइज डायग्नोसिस ऑलवेज. It requires a lot of things to be concluded, like history, biochemical parameters, sonological parameters,
and a sequencing menstrual diary to come to an conclusion कि उनका PCOS है या नहीं है. Not all PCOS require treatment. Some PCO can conceive without lifestyle modification. कुछ भी बिना कुछ करते हुए भी उनका अपने आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं. So this is not a dictum. अगर मेरा कोई अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आ गया कि मेरा PCOS है तो मुझे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बिना बच्चा नहीं होगा. So this is a myth. Couple should try for year on own. जैसे मैंने आपको कहा, yes, कम से कम एटलीस्ट अगर हम लोग 1 साल देते हैं तो 90% को अपने आप विदाउट एनी ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट बनने का मौका मिलता है. बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम लोग के पास आजकल इतने टाइम नहीं होते हैं. हम लोग 1-2 महीना मैक्सिमम 3 महीना कोशिश करते हैं और हम लोग भाग जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए. Patients with age more than 35 years should consult in 6 months after they have failed to conceive. ये सच है. मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब उम्र हो जाते हैं, उम्र होने से औरत के अंडे जो बचपन से उनकी ओवरीज में रहते हैं, उनकी कैपेसिटी टू फर्टिलाइजेशन घट जाते हैं. उनके डीएनए में काफी चेंजेस आते हैं और उसलिए at certain age they undergo lot of changes जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देते हैं. All fertility treatment is IVF. This is a myth in totality. जब भी हमारे पास कोई आते हैं, I don't conclude that वो लोग IVF के लिए ही आते हैं, because मेरा फर्ज बनता है उनको उनसे बातें करने का, to make them comfortable and let me understand what is their issues. As I told you, around 40 to 50% of my patients, they succeed in achieving their pregnancy only with counseling. So this can never be synonymous with IVF. What is the fact then? The treatment is individualized, and it's not that everyone who drops into an ART center will always require IVF. Myth: a woman can become pregnant only on day one of her menstruation. And what is the fact then? After the egg gets released, it is available for around 12 to 24 hours. However, a woman can get pregnant 5 days prior to and 2 days after ovulation by having a relationship. ये क्यों होते हैं? मैंने आपको अभी अभी कहा कि ओवम जो फीमेल एग कहा जाता है, उनकी लाइफ टाइम है अराउंड 12 to 24 आवर्स. लेकिन एक सही स्पर्म एक सही औरत के बदन पे 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है. And that is why it is not always mandatory to have daily intercourse when you are planning for a pregnancy. Probability can increase and should increase, but it doesn't vary when you have an alternate relationship. When you have a daily relationship, the probability, what we call it fecundability, is around 37%. But when you bring it down to alternate day, it drops down to only 33%. लेकिन अगर आप उसी समझ के वीकली कर देते हैं, हम लोग जब बच्चा सोचते हैं और एक ही दिन हम लोग पर वीक रहते हैं, then it drops down to almost 15%. So be comfortable and enjoy your relationship, जो मैं सबको कहता चाहता हूँ. Sperm can live for few hours only in the female genitalia. This is a myth in totality. मैंने आपको अभी अभी कहा, it can live from 3 to 5 days and in some cases even to 6 days अगर सभी environment सही है तो. That if we want to calculate whether all environment is normal or not, that will also require a lot of equations, lot of investigations, which we normally do not like to take it up on a very first or second visit. As I told you, there is another myth about birth control pills. Women must wait for 3 months for conceiving after stopping the use of birth control pills. So what is truth? मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ. The pills actually reduce hormonal levels and they cause suppression of ovulation. औरत के अंडे बनने का ये थोड़ा सा घटा देते हैं.
So after having the pills, the hormone levels become normal instantly, and ovulation ought to begin during the next menstrual cycle. Ovulation takes place on the 14th day of the menstrual cycle. This is not always true for 100% of the women. This is an average thing that we try to speak to the couple when we counsel. अगर 28 days का cycle है तो 14 days is the answer. 30 days, then also 14 days is a possibility, but it is not true कि हर औरत 14 day में ही अपने अंडे को बाहर निकाल पाएंगे. So what is the fact? कब ovulation होंगे we do not know. This is the whole mystery of reproduction, and if we want to know the exact date, मैंने जो आपको पहले कहा था, जब पीरियड होते हैं उससे अगर हम लोग 14 to 15 days बैक कैलकुलेशन करते हैं, so that is the day when you had your ovulation. Fertility problem starts showing at 35 years of age. This is also a myth because all couples do not require treatment at the age of 35. But in reality, अगर आपको 6 months में pregnant नहीं बनते हैं, you should consult. The reason क्यों, वो भी मैंने आपको कहा, because 23 to 29 years is the best time for a couple to get pregnant. Even at that point of time, we have difficulty in achieving pregnancy in around 5 to 7% of patients. So there is nothing 100% that we can take up in medicine. It's all about probabilities and किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, that actually controls everything. But the fact is, as we age up, our probability of getting pregnant also decreases. And that is what we have to remember, because if we wait too far, we might miss the opportunity soon. Myth: having daily sex increases the chance of conception. And the fact is that having sex every other day during ovulation, especially between 12th and 16th day of the woman's menstrual cycle, is sufficient as sperm leave for these calculated days. I do not want to continue more because there are a lot of myths that goes even during the treatment, and I leave around 5 minutes of time to all of you. If you have any question, you can put it in the chat box. I'll try to answer. And if I do not get any question from all of you, maybe I'll just close down the discussion and wait for the platform provider to conclude today's informative discussion that I thought will help you to plan your future. But I'll always like to add up every children when they grow up, when they understand reproduction, must have their own fertility plan. And having fertility awareness is most important, one of the most important, I should say, in today's era, because we also do not know when your eggs are going to suffer, even if you do not have any disease. हम लोग यही देखते हैं कि यंग गर्ल्स अराउंड 23, 24, 25 years, वो लोग आते हैं, उनके अंडे रहते ही नहीं है. जब हम लोग ये उम्मीद ही कर नहीं सकते हैं, बिकॉज एट दिस एज वी टेल टू द पीपल दैट दिस इज द राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट. सो we must have certain awareness the way we are having right now. We must have a certain plan, and जब हम लोग दोनों को combine कर लेते हैं, रिजल्ट जब आते नहीं है, it is always wise to come to an reproductive consultant और खुल्लम खुला दिल के बातें करके कहाँ पे प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं हम लोग संभाल सकते हैं. Thank you so much on this special day of Deepavali. I hope I have thrown little amount of light of your reproductive queries, because ये सब बातें हम लोग खुल्लम खुला कर नहीं पाते. We do not discuss this thing in the open, and I thought this should be clarified, and this is one of the very important issues on today.
Thank you so much. There is a query by Sudipta Mishra who says, I have my right tube disconnected as I had hydrosalpinx, but left tube is pattern. Can I conceive naturally? Obviously, मैडम, अगर आपका बाकी सारे फैक्टर्स सही हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सही है? प्रेगनेंसी होने के लिए, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हमको सबसे पहले जरूरी है लक, जो हम लोग कुछ इंडिविजुअली कर नहीं पाते हैं. सेकेंड थिंग इज आवर इंडिविजुअल एग्स, sperms and ovum has to be normal. Second, the fallopian tubes has to be functionally normal, and one of your tubes is damaged. So I expect that some amount of problem with the other tubes as well. क्योंकि अगर आपकी एक ट्यूब खराब हो चुके हैं, तो there has to be certain reasons why your tube got damaged. But in spite of that, if your left tube is perfectly normal, and if your endometrium is behaving perfectly the way it should, there is a good chance that you can have a natural pregnancy. But the one who has done the tubal occlusion would be in a much better position, because उन्होंने अंदर जाकर के देख लिए हैं आपके लेफ्ट ट्यूब की हालत क्या है, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बच्चे बनने के लिए जरूरी है उनका हालत क्या है. एंड आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप उन्हीं के पास जाकर के बात कर लीजिए, क्योंकि हमको लेफ्ट ट्यूब इज पैटर्न. पैटर्न का मतलब है ट्यूब खुले हुए हैं, लेकिन उनका फंक्शन सही है कि नहीं वो जानना थोड़ा मुश्किल है. So one who has performed laparoscopy would be able to guide you much better. But there is always a possibility if your tube is normal. Thank you, Mr. Ji. आपकी सवाल, I hope I have been able to answer it. अगर ठीक है, last month you are asking again. Last month I had 2 eggs from left ovary, both ruptured. Endometrium lining is 11.7 millimeter, but no pregnancy. My left tube is patterned. हाँ, this is one thing. जो आपने अभी मुझे सवाल पूछा कि मेरा लेफ्ट ओवरी से 2 अंडे निकल चुके हैं, मेरे ट्यूब सही है, स्टिल एंडोमेट्रियम भी सही है, स्टिल मुझे प्रेगनेंसी नहीं आया, तो इसका मतलब यही है कि आई विल कंक्लूड we might be having some problem, but at least you try for few more attempts in a similar way. अगर at least after attempting for 3 to 4 attempts आपका प्रेगनेंसी हो नहीं पाते हैं, then we will change the line of treatment. और इस बीच में आपकी उम्र काफी इंपॉर्टेंट रहेगी. If you are 35 plus, I would say you should switch over to a reproductive technology. Otherwise we might get little delayed. But if you are younger, अगर आपकी एज सही है, आपकी ओवरियन रिजर्व सही है, if your male partner is perfect, we can still try few more attempts naturally. And thank you again for asking the question, because this is how we get to clarify your doubts in a perfect way. Thank you so much.